Defying is Worse than the no color. it was okay. I'm sorry, because then I asked a question, then we went. No. I'm also, Maharaj, you forgive me, I'm here to please you. आपकी सुख देने के लिए मैं तो उपस्थित हूँ और मैं तो आपके राधा रस पिलाने के लिए तो मैं आता हूँ और आपको आपका रस भंग हो जाता है, ये मेरा अपराध हो जाए। नहीं, भंग नहीं महाराज। I know say that is a bhanga, but rasa is rasa. You cannot deny this, right? How you can change the philosophy? Then it will be doubtful for them. Something happen like what I feel. You say I try to practice 6 years about my Siddha Deha and then I leave it. No. Why not? Yeah, go ahead. Yeah. So why not you feel there was some mistake in the practice that you not get the test for that? Why you say that? He said, I after doing I leave this. No, because I say, my idea is well, जो भी हो, राधा रानी ऐसे कराए, तो मेरे जीवन में राधा रानी चैतन्य महाप्रभु, मैं जब भारत छोड़ के वापस गए अपने देश, तो मैं शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी बात भी कहते हैं। वो कहते हैं जी what is it that गलाय डोर बांधे আমাকে নিয়েছে বৃন্দাবনে and then कोनो अपराधे আমাকে लाठी मार के दूर कर दिए। तो अगर आपका फिर कृपा हो तो मुझको फिर वृंदावन ले जाओगे। ये तो नरोत्तम दास के प्रश्न में है। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपन हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर। वृंदावन में रहो तो विपिन राज सीमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि, आप कोट चिंतामणि कितनी भी मणि मिल रही हो तदपन हाथ पसंद, उनको भी हाथ नहीं पसंद। तो ये हमारे संप्रदाय में जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए और वृंदावन यहाँ तो गुरु किया, शास्त्र अध्ययन आदि किया, भजन आदि किया। तब संप्रदाय आचार्य जीव गोस्वामी आदि ने नरोत्तम दास को वापस भेज दिया बंगाल, और सब शास्त्र के लेके वो तो बंगाल चले गए। वहाँ प्रचार चैतन्य धर्म सद गोस्वामी रूप आदि गोस्वामियों के शास्त्र का प्रचार करने के लिए भेज दिया। तो I don't like this. It's not funny. Talk English or don't talk at all. I want also part of it or Okay, I'm sorry. So I'm saying. I know that you're telling confidential things. No confidential. No, not confidential. So, I'm sorry. Because of Hindi talking, he said, but it's not confidential. No, so Narottam Das Thakur in Prarthana, he prays. He says that I came to Vrindavan. Radharani was merciful to me and brought me to Vrindavan. Forced me to Vrindavan because he's saying that I have no qualification. I have no qualification to come to Vrindavan, but somehow or another Radharani's mercy brought me to Vrindavan, and in Vrindavan I was happy. So you see so many beautiful prayers in Prarthana where he prays about coming to Vrindavan and rolling in the dust and bathing in Radha Kund and so on. So then he says, you brought me to Vrindavan, and then I don't know what aparadha I did, but you kicked me out. So you kicked me out, and then again, so he's praying, if you be pleased, merciful to me, then, tie a rope around my neck and
pull me back to Vrindavan. So, and also in Chaitanya Charitamrita, there's what's the context again? Mahaprabhu also he says Dhanya se Prabhu je na tyaje nija das. Dhanya se Prabhu je na tyaje nija das. So he says that Prabhu is fortunate who doesn't, or glorious, who doesn't give up his servant. So he says that the servant, like once I said to, when I left India, I said, you made this promise. You made this promise that you don't give up your servant. It says, I said, now I'm going. But I'm understanding that you're doing it, and that you are going to give me some mercy at the end of this, because I'm not happy right now. I was telling you, you can imagine, I mean, I was in a serious kind of crisis. Now, that was, yes, I could say that my problem, but I've been already thinking like that for 2 years. I mean, it wasn't such a day that I say, okay, now I'm going to stop chanting 64 rounds, or now that I'm doing, when you have that kind of crisis, there's nothing much you can do. If you stop, if you get into a point where your bhajan is, it has fallen apart, then it's very easy to say, well, I'm doing something wrong. Of course you're doing something wrong. But to say that I'm doing something wrong, well, then that's not, to just say I'm doing something wrong, to flagellate yourself and to beat yourself up, that's not the conclusion. That's not the solution. So for me, the solution is usually that you have to act according to your nature. You have to follow your nature. You have to follow what it is that Mahaprabhu is making you do. Where are you being led by the grace of God, and that you keeping your eye somehow or another. Because I never took my eye off the ball. It was always let me try to understand Radha and Krishna. But I had to understand that my mentality, I'm a Westerner, I'm a Western person, and so you can take me out of America or take me out of Canada and stick me in India, and even now I speak the language, I can speak Bengali, I can speak Hindi, I'm better at Sanskrit than 90% of the Sanskrit pundits, and still I'm not an Indian. Yes, exactly. I'm not an Indian. I'm still going to speak, I'm never going to speak Hindi without an accent. Yeah. I'm never going to speak Bengali without an accent. Yeah. And although my Sanskrit is perfect, I will not admit that बोलिए. चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलकर के अवतार हुआ. चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार जो है मिलकर के हुआ है. राधा कृष्ण दोनों मिल गए. राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा स्वरूपम कलात्मानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा है. दोनों का स्वरूप एक होकर के तब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ. महाप्रभु का अवतार, ये 12 अवतार जो दिखाते हैं, जिनमें कच्छ, मच्छ, 12, नरसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, राम, कृष्ण, ये अवतारों से अलग है. चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है इन सबसे अलग है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, द्वेष भावना हटाने के लिए, सबको प्रेम और हरि नाम संकीर्तन सुनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ. चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम के प्रभाव से ही सबको सुधारा. किसी को मारा नहीं, किसी को दंड नहीं दिया. दंड दिया कब? जब के निताई के ऊपर जगाई मगाई ने प्रहार किया. निताई के ऊपर जब जगाई मगाई ने प्रहार किया और उनको मारा, तब भगवान को महाप्रभु जी को क्रोध आया. तब उन्होंने हाथ नहीं उठ, केवल चक्र सुदर्शन का आवाहन किया. चक्र सुदर्शन का आवाहन किया, तब उस समय आकर के मुरारी ने रोक दिया. चैतन्य महाप्रभु जी का एक सखा था मुरारी. मुरारी ने आकर के रोक दिया कि नहीं, इसके लिए तो क्यों, मुरारी हनुमान जी का अवतार.
मुरारी जो था हनुमान जी का अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार राधा कृष्ण मिलकर के हुआ है। भूमि तत्व समझ रहे हो मेरी बात? भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व गौरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेष और सुरेश तत्व नेत नेत जोड़ी है। प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो, नारद गणेश तत्व शिव तत्व गोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हु को तत्व वृषभान की किशोरी। सबका तत्व जो है ये तो गाते हैं गौरव कृष्ण गोस्वामी, ये गौरव कृष्ण गोस्वामी गाते हैं ना। यही तो हमारे बात है, इसके बारे में तो कोई we don't have any problem with this. He's just explaining that you know the Mahaprabhu's जय श्री कृष्ण। avatar. जय श्री जय Okay. जय श्री राधे। Because you are one way, one design, This I like. you will mix it. There was What do you like?